Another deep breath in. One, zero. Breath up, receiving. So today the topic is thyroid. Okay, and this topic is from Professor G.C. Agarwalji's book Parikshan 1. Parikshan 1. It is in that book. It is chapter 5, which is thyroid function test. We want to understand more about thyroid, its functions, and different tests that are related to thyroid or that should be conducted to understand the functioning of thyroid. That is thyroid function test. Okay. So सबसे पहले तो ये समझिए कि what is thyroid. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं which are always there in our mind related to thyroid. For example, if doctor says that the person is suffering from thyroidism, whether it is hypothyroidism or hyperthyroidism. Person is suffering from goiter. Person is suffering from disbalance in TSH. Person is suffering from disbalance in T3 or T4 hormone. Then what you understand is just then you understand that it is related to thyroid gland. So what is this thyroid gland? What are these different hormones? Why the hormones are going up or down? Where are these hormones produced? What is the role of these hormones in the body? What is why in pregnancy the thyroid gets disbalanced? How is it related to contraceptive pills? Why sometimes TSH goes up, T3, T4 remains normal? Why at times TSH is normal, T3, T4 is disturbed? All these questions will be answered once we understand more about this particular gland and its functions and hormones. एक बार जब हम इसके बारे में समझ लेंगे, देखो एक तो है जिसको बोलते हैं नीम हकीम खतरेली, है ना? नीम, इस फ्रेज का मतलब क्या है? नीम हकीम खतरेली, यानी कि नीम हकीम खतरेली का मतलब है कि थोड़ा बहुत तुमसे कुछ कुछ पता चल गया तो क्या होगा? पेशेंट की जान को खतरा हो जाएगा। हम में से कितने लोग नीम हकीम खतरे जान की फ्रेज में आना चाहते हैं, इंक्लूड होना चाहते हैं? कोई भी। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हम करें उसको हम समझ के करें कि क्या है, क्यों हो रहा है ना? तो इसलिए इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? बिकॉज लाइक प्रीवियसली इट वाज ब्लड प्रेशर, that every third or fourth person is suffering from whether either high blood pressure or low blood pressure. फिर उसके बाद डायबिटीज का एक दौर आया कि every third fourth person is suffering from disbalance in sugar level. डायबिटीज हो रही है, डायबिटिक मेलाइटिस इसको बोलते हैं। अब एक और चीज, जैसे हम पूछते हैं ना ब्लड प्रेशर है क्या, डायबिटीज है क्या, वैसे एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन हो गया है, वो है थायराइड है क्या। नाउ इंस्टेड ऑफ आस्किंग थायराइड है क्या, हम वर्ड क्या यूज करेंगे? थायराइडाइटिस है क्या। थायराइड तो सभी को ही है ना। हम पूछे टॉन्सिल्स है क्या, टॉन्सिल तो सभी को ही। टॉन्सिलाइटिस है क्या, साइनस है क्या, साइनस तो सबको है। साइन्यूसाइटिस है क्या, वैसे थायराइडाइटिस है क्या, थायराइड से रिलेटेड कोई डिसबैलेंस है। तो इट मे बी ईदर हाइपोथायरॉयडिज्म और इट मे बी हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब क्या है? कम, लेसर। हाइपर का क्या मतलब है? ज्यादा होता है। अगर थायराइड का फंक्शन अपने लेवल से कम हो गया, जितना उसको फंक्शन कर रहे उतना काम नहीं करा, उससे कम काम कर रहे, तो क्या होगा? देन इट विल बी हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होगा?
जितना काम करना चाहिए उससे ज्यादा कर रहा है, देन इट विल बी हाइपरथायरॉयडिज्म। कौन सा अच्छा है, हाइपोथायरॉयडिज्म अच्छा है कि हाइपरथायरॉयडिज्म अच्छा है? कोई भी अच्छा नहीं। अच्छा क्या है? बैलेंस्ड। बोलना चाहिए क्या, चुप रहना चाहिए क्या? बोलेंगे तो क्या बोल देंगे? ओरल डायरिया। ज्यादा बोलने लग गए, सुना कम, तो क्या हो गया? ओरल डायग्नोसिस हो गया ओरल डायरिया। यानी जो डायरिया नीचे से होता है उसकी जगह ऊपर से हो गए। बोल रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, कंटिन्यूस बोल रहे। और दूसरा है चुप हो गए, बात ही नहीं की, बिल्कुल चुप हो गए। कौन सा अच्छा है? जो बैलेंस होगा वो अच्छा। जरूरत पड़ी तो बोलो, अदरवाइज सुनो, है ना? तो एवरीथिंग दैट इज बैलेंस्ड इज नॉर्मल एंड गुड। नाउ लेट अस कम टू थायराइड ग्लैंड ओनली। थायराइड ग्लैंड पर ही फोकस करते हैं। वेयर इज दिस थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द throat area. कहाँ in throat area? Just below the larynx. Just say just place your fingers here like this and say uh. You'll feel vibration. Then feel the vibration which is highest at a particular point. Feel the vibration here. Feel vibration. Feel vibration. Feel vibration. You'll find a point which is of highest vibration, right? That area which is vibrating maximum, जहाँ पे सबसे ज्यादा vibrations feel हो रहे हैं आवाज के, that is larynx, voice box. So just below the larynx. Why we are finding out larynx? Because the location of thyroid gland is, एक एक उंगली से या एक ऐसे करने से पता नहीं चलेगा. Place 2-3 fingers, then only you'll be able to find out. Just below the voice box is thyroid gland. Okay. So thyroid gland is an endocrine gland. What is the meaning of endocrine? Endocrine means a gland that produces hormone. There are so many endocrine glands present in a line in the body. Hypothalamus, pituitary, pineal, thyroid, parathyroid, thymus, pancreas, adrenal, uterus, testis. All these glands act as endocrine glands. So thyroid gland is also one of them. So thyroid gland is a part of endocrine system also. So I'll share my screen with you. Whatever I am writing, these are key points, but very important points. Note it down for yourself. And if I share any picture, keep the picture also, because those are very nice. Okay. Am I audible and visible? Yes? Okay. So what we need to know that thyroid gland is the largest gland in the body. It's a very important point. It is present. Where is it present? Location. It is present below the larynx on trachea. What is the shape?
Its shape is H shaped. And two lobed. That means it has two lobes. Two lobes are connected with a bridge called isthmus. Isthmus. So if these are the two lobes of thyroid gland, then this is one lobe, lobe 1, and this is lobe 2, and in between the two we have this area which is called isthmus or the bridge. After shape, color. What is the color of endocrine gland? This particular gland, it is pinkish in color. What is the weight? Weight is about 15 to 20 grams only. So it's a small gland. Function, it has, the main function is to secrete hormone. The main function of thyroid gland is to secrete hormone. So what are the hormones secreted by thyroid gland? One is thyroxine. Learn it like this only. Thyroxine. Second is, और you do one thing, just a minute. इसको पहले ऐसे लिखो, ऐसे ज़्यादा याद रखेंगे. पहले लिखो T3, then you write T4, and then you write calcitonin. Calcitonin. So these are the three hormones. What are the three hormones? T3, T4, and calcitonin. Now what is T3? T3, 3 here means 3 parts of iodine is attached to it. I'm just simplifying the whole thing and explaining. 3 भाग iodine is hormone में present है. That is why it is called T3. Okay. So the full form is tri, iodo. Iodo means iodine. Iodine का मतलब है iod, जो चाहिए नमक. ठीक है. Tri means 3. Iodo means नमक. Iodo thyronine. THYRONINE. Learn this name. Triiodothyronine. Okay. And T4 is tetra. Tetra means 4. Tetra pack. जिस पैक में 4 कॉर्नर्स निकले हुए बोलते हैं टेट्रा. ठीक है. तो टेट्रा आयोडो टायरोसिन. TYROCINE. tetra iodotyrosine. So there are 3 hormones. What are the 3 hormones? One is T3, second is T4, and third is calcitonin. T3 is triiodothyronine, T4 is tetraiodotyrosine, and calcitonin. So these are the different hormones produced by thyroid gland. Okay. Now comes a very interesting and very important part, and that is how these hormones are secreted. कैसे निकलते हैं?
कैसे निकलने, तो आप बोलोगे थायराइड ग्लैंड से निकलता, because we are discussing about thyroid gland, so thyroid gland is producing these hormones. No, it does not happen like that. How the story starts? The story starts from hypothalamus. Hypothalamus. What is hypothalamus? Hypothalamus is a part of brain. It's a small, very small part of brain. दिखाऊंगे तो आप बोलोगे बस इतना सही है hypothalamus. But that very small part of brain is actually, it is beyond master. It is super master. Super master gland of the body, of the brain. So this hypothalamus, in the hypothalamus, there is a certain area. Remember the name of that area also. It is suprachiasmatic nucleus. So एक particular area इसको हम बोलते हैं nucleus. Nucleus का मतलब होता है accumulation of nerves, accumulation of some information is called nucleus. So that particular part of hypothalamus, hypothalamus तो अपने आप में बहुत छोटा सा, उसके उस छोटे से part का भी very fine area is called suprachiasmatic nucleus. This nucleus secretes a particular hormone, and this hormone is called TSH RF. That means thyroid stimulating hormone releasing factor. RELEASING, releasing factor. Now this TSH RF, this goes to pituitary and tells pituitary that you have to work, you have to help me. How to help me? By secreting a hormone which is called TSH. So pituitary secretes the hormone TSH, that is thyroid stimulating hormone. Now this TSH goes to thyroid gland and helps in secretion of T3, T4 and calcium, all the hormones of thyroid. So it's a very simplified version of the whole thing that I have explained. If you go into the details, there's a lot to know, lot to understand, but we don't need too much of explanation. We need only what is needed for us. So I'll show you some pictures. These pictures are very interesting and very important. First, see this. So this is the throat area. This hole is what? The throat area. On the throat area, we have the larynx or the voice box. This is the voice box. Just below the voice box is the thyroid gland. So this is thyroid gland. Okay. So this thyroid gland has two lobes. One is left lobe, another one is right lobe. In between the two is a bridge which is called isthmus. And this gland is present on a pillar. What is that pillar? This pillar is trachea. बात समझ में क्लियर हो? ठीक है ना? बहुत सिंपल है. पिलर है, that pillar is trachea. ऊपर सपोर्ट किसका है? वॉइस बॉक्स का. उसके नीचे टू लोब स्ट्रक्चर है. One is right lobe, another one is left lobe. Both the lobes are connected with each other, which is called isthmus or the
Which see this picture. What I was explaining. This is what? Brain. In the brain, there is a small part, very small part. You can see this yellow part. This is yellow part. This yellow part is hypothalamus. Okay. And you can also see there is a small T-sized structure present here. This part. This T-sized structure is nothing but the pituitary gland. So in the hypothalamus, there is, so this part is a part of hypothalamus. So in the hypothalamus, there is a particular part which is called suprachiasmatic nucleus. देखो कहाँ है, कितना छोटा है, किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं इंडिया की, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, हम बात कर रहे हैं दुनिया, हम बाहर की बात कर, अंदर आ जाओ। अंदर कितना पता है? हम लड़ाई कर रहे हैं खाने की, हम लड़ाई कर रहे हैं चीजों की, लड़ाई कर रहे हैं रिश्तों की। अपने अंदर 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 आते जाओ, देखो क्या है अंदर। एक छोटे से ग्लैंड हाइपोथैलेमस का भी छोटा सा हिस्सा देखो, सुप्राचाइस्मेट, उसके भी अंदर चले जाओ तो देखो वो क्या करें। और उसके अंदर तो हम गए भी नहीं अभी। कहाँ deep embedded inside the brain is a small gland, small part, hypothalamus. And of that small part only there is a smaller part which is suprachiasmatic nucleus. And that small part is releasing a very important hormone, TSH-RF. Is this clear? Up to this part it is clear? Now this TSH-RF is going to, from here, it is coming to the pituitary and it is asking the anterior pituitary to secrete some hormones. Okay, clear? Clear up to this part? So now we move to the next part, which is very interesting. And it is components on which thyroid hormones are dependent. कौन सी बातें जिसके ऊपर ये हॉर्मोन्स डिपेंड करते हैं? हम बात तो करते थे कि मेरे तो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकल, कौन सी बातें किन चीजों के ऊपर डिपेंड करते? सो इट डिपेंड्स ऑन 4 factors. How many factors? 4 factors. One is thyroid gland tissue. The tissue of the thyroid gland. Let us mark it as 1. Second is iodine. Third is thyroglobulin. What is thyroglobulin? It is a special protein.
Where is it produced? Produced by thyroid. And fourth one is thyroid peroxidase. Peroxidase. What is thyroid peroxidase? It is a special enzyme. Where is it produced? Produced by thyroid. तो चार फैक्टर बताए, चार चीजें जिसके ऊपर ये हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन डिपेंडेंट है. फैक्ट्री, अगर बोले कि कोई चीज की फैक्ट्री और फैक्ट्री कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो फैक्ट्री में किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड? एक है उसकी मशीनरी, एक है उसके वर्कर्स, एक है द मैनेजमेंट, है ना. वैसे ही थायराइड किसके जो हार्मोन है उसके ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट? इट इज डिपेंडेंट ऑन द टिश्यू ऑफ द ग्लैंड. It is dependent on a raw material which is iodine. It is dependent on another raw material which is a protein which is called thyroglobulin. It is also dependent on the workers which will make this hormone, which is an enzyme. What is that enzyme? Thyroid peroxidase. Now we'll learn about each of these factors. Let us come to the first one, which is thyroid gland tissue. कभी भी इसके बारे में मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में हमने कभी पढ़ा होगा कि थायराइड ग्लैंड का टिश्यू होता है. बट आप जब पढ़ोगे ना, बहुत सारी बातें आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये कभी पता ही नहीं था, ये तो हमें पता होना चाहिए था. So first and foremost, what we should know is that thyroid gland is two-lobed. ये तो सबको पता चल गया, ये तो हमने कई बार अभी बोल लिया. Now each lobe is made up of smaller structure which is called lobule. And each lobule consists of follicles. Some structure which are called follicles. Each lobule is made up of follicles. These follicles are also called acini. A-C-I-N-I. Acini. Now we are talking about each acini. चार है, हम अंदर जा रहे हैं, ऐसे सोचो उतरते जा रहे हैं शरीर के अंदर 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 अंदर. बाहर सबको जाना पसंद है ना, इंटरनेशनल और बियॉन्ड. अब चांद पे जा रहे हैं, दूसरे दूसरे प्लैनेट्स पे जा रहे हैं. अब वैसे ही जर्नी जैसे बाहर है वैसे ही जर्नी. देखो खराब और अच्छा कुछ भी नहीं. अब हम अंदर की जर्नी पर, अंदर डीप. पहले थ्रोट में गए, फिर थायराइड में गए, फिर लोब में गए, फिर लॉब्यूल में गए, है ना. लॉब्यूल के बाद फॉलिकल में गए, फॉलिकल की एसिनी में गए. अब फॉलिकल के एसिनी के भी अंदर चले जाओ, then you will see that if this is one acini, that is one small structure, this is one acini. और ऐसे बहुत सारे acini होंगे which are forming together forming lobule. और फिर वो lobule मिलके लोब बना रहा है, लोब मिलके thyroid gland बना. So each of the acini has an outer covering. ऐसे outer covering of cells. These are cells. And these cells are very much special cells. These are cells. A layer of the cell is present, which is epithelial cell. Now these cells are very important cells. Why these cells are very important cells? Because these cells are the cells which are producing thyroglobulin. यही वो सेल्स, जैसे बोला ना अभी, क्या बोला कि थायरोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन द थायराइड. ये तो बोल दिया, ये तो मोटी बात हुई. व्हाट इज द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ दैट?
Where is that thyroglobulin is produced? It is produced in the epithelial cell of acini. What is acini? The smallest part or the basic unit to produce a thyroid hormone. So inside each of the cell, that raw material is produced, thyroglobulin. Also, since it is forming a pocket-like structure where the epithelial cells are forming the wall, it has a central lumen. It has a central lumen. Lumen का मतलब होता है cavity. So this central cavity is the area where, जैसे आपने रॉ मटेरियल बाहर से मंगाया और फिर फैक्ट्री में अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वैसे ही रॉ मटेरियल बाहर से बन रहा है या बाहर से कुछ आएगा, अभी हम देखेंगे, और बाहर से आएगा भी. एंड इन द सेंट्रल ल्यूमेन these raw materials are getting assembled. Okay, so this central lumen is filled up with colloid, filled with colloid material. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. Now come to the second raw material, which is iodine. अब इस आयोडीन के ऊपर तो बहुत बिजनेस हो रहा है, बहुत लोगों ने बहुत कमाए हैं. क्यों? क्योंकि आपको आयोडीन खिलाना है ताकि आपको थायराइड की प्रॉब्लम ना हो. आपको मीन्स हम सब, उसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे. बट आयोडीन इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट, वन ऑफ द पार्ट to produce thyroid hormone. So second is iodine. The symbol of iodine is I2. ये ऐसे लिखा जाता है. केमिकली लिखना हो आयोडीन को तो हम लिखेंगे I और बेस में लिखेंगे 2. That means there are 2 atoms in one molecule of iodine. बस समझ के रखना I2 लिखने का तरीका है. So this I2 or iodine is required for synthesis of thyroid hormone. So where is this iodine coming from? Where is this iodine coming from? When you take in food, from food, the nutritional component goes to small intestine. It is absorbed by blood, and with the help of TSH, thyroid stimulating hormone. The thyroid stimulating hormone is not only helping the thyroid to stimulate and produce the required hormone, it is also bringing the iodine from the absorbed food and brings it to acid. Factory का नाम क्या है? Acid. What is the name of the factory? Factory name is that we have already discussed. But this acid is unable to enter in the this iodine is unable to enter in the acid. अब इस iodine को अंदर घुसना है, बट इसके अंदर आयोडीन नहीं घुस सकता है. क्यों? बिकॉज इट इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, बड़ा है, साइंस फॉर्म. रॉ मटेरियल तो आ गया, बट रॉ मटेरियल का जो ट्रक है वो गेट के अंदर से नहीं घुस सकता. तो आप क्या करोगे? समझो कपड़े की फैक्ट्री के लिए कॉटन चाहिए. कॉटन किस में भर के आए हैं? कॉटन बोरों में भर के आए हैं, बैग्स हैं बड़े बड़े, और उन बस्ते या बोरों के अंदर से कॉटन को ट्रक के अंदर लोड करके फैक्ट्री तक भेज दिए. लेकिन वो कॉटन कोई काम का नहीं है. क्यों काम का नहीं है? क्योंकि वो कॉटन का ट्रक अंदर नहीं घुस सकता. तो क्या करें? हम उन बैग्स को निकालेंगे, डीलोड करेंगे, लोडिंग वहां से हटाएंगे
और लेबर्स को बोलेंगे कि लेके जाओ, एक एक बोरा अंदर करके लेके जाओ और फैक्ट्री के अंदर ले जाओ और प्रोडक्शन शुरू करो. सेम थिंग हैपेंस. So this iodine is unable to enter in the SNE, so it enters in the ionic form. Iodine enters SNE in ionic form. What is the ionic form? Ionic form means a smaller form of iodine, which is I minus. Give me one moment. Sure. So this ionic form, I minus means only one atom of iodine is entering in the SNE and gets stored in SNE lumen. SNE lumen. ये जो SNE की ल्यूमन थी, यहाँ पर आकर ये आयोडीन इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, so this is iodine. And that is why even if you don't take iodine for some time, this iodine is stored in the lumen. Understand this. आज iodine नहीं खाया तो आज थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं है. 2 दिन अगर ट्रक्स नहीं आए कॉटन लेकर, रॉ मटेरियल लेकर, तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है. जो फैक्ट्री चलाते हैं उन्हें पता है कि उन्हें कुछ स्टॉक में रखना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा, ताकि प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होता रहे. अगर बाई चांस रॉ मटेरियल नहीं आया तब भी काम होता रहे. Same thing happens in the body also. This iodine in the ionic form is stored in the lumen of SNE, so that the production of hormone is continuous. Okay, so this is about iodine. And that is another reason that this iodine, if we test, or if we find out the concentration of iodine in the thyroid gland, we'll see that more iodine is present here in comparison to rest of the body. Now we come to the third part, which is the raw material, and it is thyroglobulin. Thyroglobulin. This is very interesting. This thyroglobulin is a very, very interesting raw material. Why interesting? Because thyro means related to thyroid, thyro, 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 thyroglobulin. So this thyro means related to thyroid, and globulin means protein. So it is a type of protein. If I write TG, then understand that TG means thyroglobulin. I will not write thyroglobulin in complete word again and again. So this thyroglobulin is synthesized in epithelial cells of SNE. ये जो अभी हमने देखे ना, epithelial cells of SNE. What is this red thing? Red thing is thyroglobulin.
Thyroglobulin. Okay. So it is synthesized in the epithelial cells of acini, and it is made up of large number of amino acid. What is amino acid? Amino acid is the unit of protein. Protein is made up of amino acid only. Smallest unit of protein is called amino acid. So this thyroglobulin is also made up of amino acid. Which amino acid? Remember the name of the amino acid, which is called tyrosine. Tyrosine. SINE. Tyrosine. So many tyrosine molecules of amino acid together, they make thyroglobulin. Okay. So now when the thyroglobulin is formed in the epithelial cell, what will it do? It comes to lumen of acini. So now acini has both the raw materials, that is thyroglobulin also, and it has iodine also. Correct? So comes the role of another raw material or another worker. Here it is not raw material. The fourth one was worker who is making the cloth. So this fourth one is thyroid peroxidase. What is thyroid peroxidase? Thyroid, see, whenever you get the term ASE, it means enzyme. ASE at the end means enzyme. So what are enzymes? Enzymes are the catalyst. Catalyst means they act as the agent to speed up the process of something. That is called enzyme. So here this is also an enzyme. That means it's a substance that will speed up the process of formation of something. Okay. So what will it do? This peroxidase enzyme. This is an enzyme. An enzyme. Where is it present? It is present again in the factory only. That means it is in the lumen. Which lumen? Acini lumen only. This is lumen. These are the cells of acini. So this lumen has both iodine and it has also thyroglobulin. And this enzyme, this is the enzyme, thyroid peroxidase, TP. TP, thyroid peroxidase. What does this thyroid peroxidase do? First, it converts iodine ion. I minus is what? Ion, ionic form of iodine into its molecular form, which is iodine, I2. Again, I2 is formed. And after forming I2, it connects I2 with thyroglobulin. Okay. Which part of thyroglobulin?
with the tyrosine. What is tyrosine? Tyrosine is the amino acid with which, see, what did we say? Tyrosine is the amino acid with which thyroglobulin is formed. Okay. So this iodine gets attached to tyrosine of thyroglobulin. So if one molecule of iodine is getting attached to tyrosine, it forms MIT, monoiodotyrosine. MIT. M means mono, single. Iodo means iodine. See why these things are important. We are just coming to the conclusion. जो कपड़े, जिस लिनन की, जिस कपड़े की, जिस रेशम की आप बात करते हैं, उसका अगर रॉ मटेरियल समझ लेंगे, उसका प्रोसेस समझ लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जिस कपड़े की हम बात कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट, जिस हार्मोन की हम बात करें अगर पता चल जाए कि बना कैसे है तो कितना इंपॉर्टेंट लगेगा वो हार्मोन. दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So if one molecule of iodine is getting attached to tyrosine, it is not tyroside, it is tyrosine. Tyrosine. Then it forms MIT, monoiodotyrosine. But if two molecules of iodine are getting attached with tyrosine, it forms DIT. What is the meaning of DIT? Diiodotyrosine. Monoiodotyrosine and diiodotyrosine, these two are formed. Where is it formed? It is formed in the lumen node. बन गया, हो गया. अगर mono means one, di means two. If mono gets attached with di, then what will it form? Your T3 hormone. What was the full form of T3? Triiodotyrosine. So how this T3 is formed? This is how it is formed. Okay. So what is enzyme doing? Enzyme is helping in connection of iodine with tyrosine. So if one molecule of iodine is getting connected with tyrosine, it is forming MIT, monoiodotyrosine. If one molecule of iodine is connecting with two molecules of iodine are connecting with one molecule of tyrosine, it is forming diiodotyrosine. And 1 and 2, these together will form T3. This is triiodotyrosine. So how tetra is formed, T4 is formed. Then you will say एक मॉलिक्यूल MIT का, दो मॉलिक्यूल MIT का ले लेंगे, एक मॉलिक्यूल DIT का ले लेंगे, ऐसे नहीं. Two molecules of DIT will form T4. एक DIT में कितने हैं? One DIT has how many molecules? Two iodine. So two molecules of, if two molecules of DIT, that means MIT plus DIT is equal to T3. बिकॉज इसमें एक है आयोडीन, इसमें दो है आयोडीन. लेकिन अगर DIT प्लस वन मोर DIT तो क्या बनाएगा? T. Is formed. T3 is formed and T4 is also formed. बन गया. यही चाहिए था ना, T3 और T4 कैसे बना. बट अभी भी देखो ये कितनी सुंदर इंजीनियरिंग है जिसको बोलते हैं इंट्रिकेसी. नो, दिस T3 and T4 व्हेन वी से दैट अगर ये ऐसे ही बन गया तो फिर TSH का क्या काम. नाउ आई विल शो यू सम पिक्चर. First see this picture.
This is what? This is thyroid gland, right? Of the thyroid gland, if we zoom, then we said that it is made up of lobe. Again zoom, it is formed of lobule. Again zoom, we are going deep, deep, deep. Then we will see that it is formed of follicle. What is follicle? So each of it is called follicle. This is follicle. This is one follicle. This is another follicle. And each follicle, as you can see, is formed of layer of cells. So these are layer of cells. What type of cells are these? These are epithelial cells. So these cells are forming a covering in each of the follicle or each of the acini. And the central part is a vacant or cavity, which is called lumen. So this is lumen. Okay. This is the area, the outer covering is the area where what is formed? Thyroglobulin is formed. You remember? Thyroglobulin. So here, thyroglobulin is formed. And what comes from outside? Iodine. यहाँ तक clear है सबको? What is present inside the lumen? Enzyme peroxidase. You remember? The enzyme of thyroid gland. See this picture. Take a screenshot of this picture because I don't think you will get more clear picture than this ever. ये बहुत सुंदर पिक्चर है. क्यों सुंदर है? देखो, इसमें आप समझने की कोशिश करना. पहले इस पार्ट को देखो. You start from this part. This is what? Blood. What is this part? This is one cell of outer layer of acini, which is epithelial cell. You remember? ये याद है? ये देखो, इसको दिखाती हूँ. ये जो है ना, ये दिस इज वन सेल. इस वन सेल को अगर हम जूम करें तो वी विल गेट दिस सेल, दिस सेल. एक सेल के अंदर क्या हो रहा है, हम वहां जा रहे हैं. एंड व्हाट इज दिस पार्ट? व्हाट इज दिस पार्ट? दिस पार्ट इज अ ल्यूमेन. यानी हम बाहर ब्लड, उसके बाद सेल, और उसके बाद अंदर की ल्यूमेन. ऐसे ऐसे देख, ठीक है. बाहर ब्लड है, उसके बाद एक सेल है, और सेल के अंदर क्या है? सेंट्रल ल्यूमेन है. यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? तो बाहर से देखो क्या फ्लो कर रहा है. व्हाट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस ब्लड? सी दिस इज ब्लड. Blood is flowing. Blood is flowing like this. It is bringing with itself what? Iodine. What is it bringing? It is bringing iodine. Where is this? देखो और भी चीजें हैं जो अभी हमारे बहुत डिटेल में जाने की ना, वो मैं इग्नोर करूंगी. जो इंपॉर्टेंट बातें समझने की खाली मैं वही मेंशन करूंगी. सो बाहर से क्या हो रहा है? आयोडीन सेल के अंदर आ रहा है. सो दिस आयोडीन इज कमिंग इनसाइड द सेल. ये यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखो आई आई लिखा है. आगे इसके अंदर आ गया. अब यहाँ से भी देखो कहाँ चला गया. गेट से होकर कहाँ चला गया? अंदर की ल्यूमेन के अंदर. ये क्या था? ल्यूमेन है ना, सेंट्रल ल्यूमेन. ल्यूमेन के अंदर आ गया. बट किस फॉर्म में आया? इट हैज कम इन आयोनिक फॉर्म, छोटे फॉर्म में आया. अब इस आयोडीन जो छोटे फॉर्म में है, इसको बड़ा फॉर्म कौन बनाएगा? एंजाइम. जो पेरोक्सिडेज हमने एंजाइम बोला था, उसे क्या बना दिया? इसको बड़ा बना दिया. ठीक है. अब इसके संग में अब इस सेल के अंदर देखो और क्या हो रहा है. बाय सम प्रोसेस, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे. बाय सम प्रोसेस. अब सिर्फ इस पार्ट को देखो, नीचे के पार्ट को मत देखो, ऊपर के पार्ट को देखो. बाय सम प्रोसेस
thyroglobulin is formed. What is formed? Thyroglobulin. What is thyroglobulin? You remember thyroglobulin? Thyroglobulin is a raw material for thyroid hormone. तो अब देखो, ये छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, यहाँ पे ये क्या है? ये कैविटी है जिसके अंदर थायरोग्लोबुलिन बन रहा है। देखो छोटा बच्चा है इसके अंदर, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। फोकस किस पे करना है? ये इस पे करना है। ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? दिस इज वन structure of thyroglobulin. Now this thyroglobulin by some process comes out into the lumen. आ गया ना? ये अंदर था, सेल के अंदर से कहाँ आ गया? बाहर आ गया। बाहर मतलब कहाँ? ल्यूमेन में आ गया, कैविटी में आ गया। तो दो चीजें हो गई, एक थायरोग्लोबुलिन आ गया, और क्या आ गया? आयोडीन भी आ गया। दोनों चीजें आ गई ना? यस, यस और नो? दो रॉ मटेरियल हो गए। दो ही तो चाहिए हमें थायराइड का हार्मोन बनाने के लिए। वन इज थायरोग्लोबुलिन एंड अनदर इज आयोडीन। तो देखो दोनों मिल गए। कौन कौन हेल्प करेगा दोनों को जोड़ने के लिए? दोनों को जोड़ने के लिए हेल्प करेगा अगेन द एंजाइम। या एंजाइम लिखा हुआ नहीं है, समझ लो, एंजाइम के बिना ये काम नहीं होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग? देखो, इफ आई जूम इट, अच्छा पहले यहाँ देखो, बिफोर दैट आई शो यू वन मोर पिक्चर। इस पिक्चर को देखो, दिस इज वन टायरोसिन, एक अमाइनो एसिड है। व्हाट डिड आई से? सेवरल अमाइनो एसिड आर फॉर्मिंग थायरोग्लोबुलिन। यस और नो? बहुत सारे अमाइनो एसिड ने मिलकर क्या बनाया था? थायरोग्लोबुलिन बनाया था ना। तो एक टायरोसिन यानी अमाइनो एसिड कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। So this is one tyrosine. This is another tyrosine, another tyrosine, another tyrosine, another tyrosine, another tyrosine, another tyrosine. ये सब देखो कनेक्टेड है आपस में, and together forms thyroglobulin. Too many amino acid forms a protein. Yes or no? Many amino acids will form a protein. What is the name of that protein? Globulin. And since it's a part of thyroid, we are calling it thyroglobulin. So this thyroglobulin, the whole chain with the amino acid. इसमें कोई पर्पल कलर के डॉट्स दिख रहे हैं क्या? कैन यू सी सम पर्पल colored dots on this chain? No, you cannot see. Why? Because this purple is what? Iodine. Now see this. इसमें दिख रहे हैं पर्पल कलर के डॉट्स, दिख रहे हैं? सो कहीं पर आप देखोगे दो डॉट्स, दो आयोडीन जुड़ गए। यहाँ पे भी दो आयोडीन है, यहाँ भी दो आयोडीन है, बट हियर इट इज ओनली वन। यहाँ दो है, यहाँ दो है। सो इफ two molecules of iodine is getting attached to a tyrosine, we are calling it DIT, diiodotyrosine. If one molecule of iodine is attaching to tyrosine, then we are calling it monoiodotyrosine. यहाँ तक बात क्लियर है? मोनोआयोडो एंड डाईआयोडो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात आती है। क्या इंटरेस्टिंग बात है? ये तो बन गया, और बन के कहाँ गया? मोनोआयोडो एंड डाईआयोडो अभी भी संग में है। देखो कहीं कुछ अलग नहीं हुआ है। The whole of the structure like this only, it comes again back into epithelial cell. वहां आके ना यहाँ जमा हो जाता है। और इसीलिए अगर थायराइड का रॉ मटेरियल, थायराइड हार्मोन का रॉ मटेरियल, वेदर इट इज थायरोग्लोबुलिन और इट इज आयोडीन, if it is not sufficient, then also thyroid, if the raw material is not continuously supplied or produced, still thyroid gland will produce thyroid hormone. Why? Because it is stored like this in the epithelial cell. ये देखो बन बन के कहाँ जमा हो रहे हैं? सब थायराइड एपिथेलियल सेल्स में आ गए। ठीक है, इस ये सेल है ना, पूरा सेल, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर, एक बोरे के अंदर, एक बस्ते के अंदर भर के उसको एपिथेलियल सेल में डाल दिया। नाउ comes the role of TSH. So whenever this TSH, where is this TSH coming from? This is coming from pituitary. So from pituitary, when the TSH comes to thyroid gland and says, knock, knock, you have to secrete thyroid hormone, then what happens? This chain breaks. See, this is one chain, but this chain breaks.
If two molecules are coming together, it forms T4. But if two molecules are joining with one molecule of iodine, it forms T3. So both T3 or T4 are produced, which are again secreted into the clear है बात clear है ठीक है ना so this is about the role of this particular enzyme so I repeat the whole thing once again whatever we did today let us start from the beginning thyroid gland it is the largest gland of the body it is present just below the larynx or the voice box it is H shaped why H because one lobe here connected with bridge so H shaped gland and it has two lobes one is right lobe another is left lobe the bridge is called the isthmus the two lobes are important because they are helping in production of the hormone what is the color it is light pinkish in color almost 15 to 20 grams in weight and produces three hormones what are the three hormones it is T3 T4 and calcitonin T3 why that is why I gave you the name and I asked you that you learn this name triiodothyronine why because then you will understand that it is three iodine T4 is tetraiodotyrosine okay and third one is calcitonin so these are the hormones produced now how these hormones are secreted first role is of hypothalamus first produces TSH RF that is thyroid stimulating hormone releasing factor that goes to pituitary and helps in secretion of TSH now TSH goes to thyroid gland and helps in production of T3 T4 calcitonin यहाँ तक बात समझ में आ गई Now there are some, now we are going in detail into the minute part of thyroid gland. Then it says that there are four things on which the production of these thyroid hormones are dependent. First one is thyroid gland tissue itself. Second is iodine. Third is some protein which is formed inside the cell which is called thyroglobulin. And fourth one is the enzyme which acts as a worker, which acts like a catalyst. Now come to the next part. First part is thyroid gland tissue. This thyroid gland tissue, as I said, the lobes are formed of lobule. Lobule is formed of the follicle. Follicle is also called acini. Acini has a single layered cell which is called epithelium. Epithelium has a central cavity which is called lumen. This outer layer of single cell, that is epithelial cell, it only produces thyroglobulin, the third important factor which is helping in production of hormone. Now come to iodine. Iodine is absorbed from food, carried by blood with the help of TSH, comes to acini cells, but in the ionic form. Okay, from ionic form, it comes to the acini, where it gets converted into iodine molecule. So iodine is important because it acts as a raw material. Third is thyroglobulin. Thyroglobulin is a protein which is made up of smaller units which are called tyrosine. Tyrosine is the amino acid. Fourth one is the enzyme which is thyroid peroxidase. This thyroid peroxidase is an enzyme which is present in the lumen and first it converts iodine ion into molecule and it also gets connected with the tyrosine of thyroglobulin forming MIT and DIT. Monoiodo and diiodotyrosine. If monoiodotyrosine gets connected with DIT, that means MIT is getting attached with DIT, it forms T3. But if two molecules of DIT and are getting attached with each other, it is forming T4. देखो यहाँ तक ही समझो आज खाली नेक्स्ट डे हम इसी के डिटेल में जाएंगे मतलब अब तो हमने रॉ मटेरियल सब बना लिया अब सिर्फ कंपाइल कर समझना है जोड़ना है okay so this is all for today if you have any question you can ask
will we get videos of it? Because detailing could not be written. इतना डिटेल लिख नहीं पाए आपने जो एक्सप्लेन किया स्क्रीनशॉट लेना था ना, तो स्क्रीनशॉट फर्स्ट किया बट उसका आपने जो एक्सप्लेन किया था वो सब लिख नहीं पाए. इट वाज वेरी गुड. और ये शायद स्क्रीनशॉट से याद ना रहे. नहीं याद रहेगा. चंचल जी सेकंड वाला पेज का मेरे को चाहिए स्क्रीनशॉट रह गया. सेकंड पेज I'll have to see. आप एक बार बिगनिंग से दे दीजिए ना प्लीज मैम. मैं सबका वापस से ले लेती हूँ स्क्रीनशॉट. This is first page. Second page. Third page. Fourth page. I'll also show you the pictures that I showed. This is one picture that I showed you. It's another picture. Third picture. This picture is complete in itself. It explains everything. Is it done? Shall I remove the pictures? Okay. Ma'am, can I speak? Yes, please. Thank you so much, ma'am. Now, if we read Parikshan, we will get something. Otherwise, before your class, Parikshan was nothing. I mean, nothing was going in. Today's class is such a eye-opener. I mean, the way you have explained it in such a detail, this after this, and I mean, every detail that has been presented. Thank you so much, ma'am. Very wonderful class. Generally, I don't prefer to come online and say, but I couldn't contain myself for the class today. Hats off, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Everything is given in the book. Okay. Nothing is mine. Everything sir has given. I've just tried to explain it. I've just tried to simplify it with pictures. So this is only half of the chapter. We are not yet done with thyroid whole. So we'll tell you when is the next class. Whenever is the next class, attend that class. You will understand more about tests. We have not yet come to parikshan. Parikshan means investigation, test. We have just understood about the different hormones which are produced by the gland. So next class, we'll talk about the tests and why these tests are done and what does it signify. Okay? Yes. Thank you so much, ma'am. Looking forward.